Hello students, we are going to start chapter number 13, which is direct and inverse proportion. So firstly, let us discuss direct proportion. Direct proportion, the meaning of direct proportion is, we can take an example like this. In this, weight of sugar in kilogram is given and cost of sugar per kg in rupees is also given, and you can see here the weight of 1 kg sugar is 18 rupees and weight of 3 kg sugar is 54 rupees. So when we are increasing the weight, the rupees cost in rupees is also increasing, and the rate of increasing is same in both. In first we multiply 1 with 3, so 1 3 is 3, but here in cost we also multiply 18 with 3 and get 54. Similarly, when we take 5 kg sugar, the price is 90. So when first is 1 is multiplied by 5, then 18 is also multiplied by 5. So this is called direct proportion, means when one quantity is increasing, one quantity is weight of sugar, when this is increasing, the cost is also increasing with same proportion, or we can say that the ratio 1 upon 18 is equal to 3 upon 54, because when we cut it, 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 8s are. The ratio between the terms remain the same throughout the whole table. So this is direct proportion. When one quantity increases, the value of second quantity is also increasing. So we can call these two quantities are in direct proportion. And inverse proportion is opposite to direct proportion, means when one quantity increasing but the other decreases, then it is called inverse proportion. Now we can see that we can write direct proportion as in this form. Here we have x1 and x2. Quantity is x, and x1 is the initial value and x2 is the final value, and upon y1 is the value of second quantity. So second quantity, initial value of second quantity and the second value of this quantity. So we will use this equation to represent two quantities and their increment, and they are in direct proportion, so we will place the sign of equal between them. First question of 13.1 is, following are the car parking charges near a railway station up to. So we are given with time and rupees for parking charges. So for 4 hours there are 60 rupees, for 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees, 24 hours 180 rupees. So we can see here that with the increase in time, the value of parking charges also increases. Now check if the parking charges are in direct proportion to parking time. So we need to check either they are in direct proportion or not. So if the ratio between the terms is same, then we can say that they are in direct proportion. But if the ratio is not same, then we will not call it in direct proportion. So
let's check the ratio between the terms. So first is 4 and 60. So 4 and 60, we will get 4 ones are 4 and 4 ones are 4, 4 5s are 20, 1 over 15, yeah, 1 upon 15. And for second, 8 upon 100, we will get 2 upon 25. And for third, we will get 3 upon 35. And for fourth, we will get 2 upon 15. So here we can see that the values of ratio is not same in all the terms. First is different from second, and second is different from third. Only the second and fourth is same, but others are different. But in if we can only say that they are in direct proportion if all the ratios are same, but here they are different, so they are not directly proportional, or they are not in direct proportions. In question number 2, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? So here we are given with one part is equivalent to 75 ml of base, and we need to find that how much red pigment is required for 1800 ml of base. So we studied that x1 upon y1 should be equal to x2 upon y2. We can also write it in this form, x1 x2 को हम और y1 को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है. x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. मतलब सेम क्वांटिटीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे x1 के प्लेस पे क्या आएगा, 1 पार्ट, और x2 के प्लेस पे हमें फाइंड करना है कि हाउ मच पार्ट वी नीड टू मिक्स इन 1800 ml ऑफ बेस. बट y1 के प्लेस पे हमें 75 ml गिवन है, और y2 के प्लेस पे 1800 ml अगेन गिवन है, ठीक है. लेकिन हमें x2 की वैल्यू करनी है फाइंड, ठीक है. तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 यूज़ करके, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया था ये. तो हमने कंसिडर कर लिया कि x पार्ट जो है वो मिक्स करेंगे 1800 ml में. सो 1 अपॉन x मीन्स क्वांटिटीज़ हमने सेम रखी, 1 पार्ट और x पार्ट, ठीक है. 1 अपॉन x इज इक्वल टू, फॉर 1 वी यूज़ 75, फॉर x लेट वी यूज़ 1800 ml. नाउ we will cross multiply them. So x into 75 and 1800 into 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है. 75 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो 1800 अपॉन 75 हमारे पास कैंसिल करके 24 पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है. तो अगर आप चेक करना चाहो दैट योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट, यू कैन डिवाइड 75 and 1800. योर रेशियो शुड बी 1 अपॉन 24, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 24 आई ना. तो 1 अपॉन 24, यहाँ पे भी 1 अपॉन 24 ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना. नेक्स्ट इज अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? So we are given with that a machine in soft drink factory fill 840 bottles in 6 hours. Now we need to find how many bottles it will fill in 5 hours. मतलब देखो 6 में इतनी फिल कर रही है वो, क्योंकि टाइम कम हो गया ना, तो ये बॉटल्स भी कम हो जाएंगी, ठीक है. तो आंसर हमेशा आपका इसका कितना आना चाहिए, 840 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि जैसे टाइम ज़्यादा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम कम पूछा हुआ है, ठीक है. तो अगेन लेट अस टेक द मेथड. वी विल कंसिडर द क्वांटिटी विच वी नीड टू फाइंड एज x. तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ बॉटल्स फाइंड करने हैं, ठीक है.
तो हमने उनको एक्स कंसिडर कर लिया। और जो हमें गिवन है वो क्या क्या है, एक तो नंबर ऑफ बॉटल्स है और एक टाइम है, ठीक है। तो 840 कितने में बना रही है वो, 6 आवर्स में। और हमने जो फाइंड करना है एक्स, वो कितने में बनाया, 5 में, ठीक है। क्योंकि अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ेगा, 1 आवर में सपोज़ करो वो 20 बनाती थी ना, तो 2 आवर में 40 बनाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो अब हमने अगेन वही मेथड अप्लाई किया कि सेम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि रेशो तो सेम आएगा ना इसमें क्वांटिटीज़ के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, ठीक है। 840 अपॉन x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम. 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 840. अब 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा इधर आके, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड होके ये क्या आएगा, पहले हम इसको 6 से कर लेते हैं डिवाइड. 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 0 एंड 5 इंटू 140 इज इक्वल टू 700. 700 बॉटल्स जो हैं वो 5 आवर्स में बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो कम आया ना आंसर, क्योंकि 6 आवर्स में 840 बन रहे थे, तो 5 आवर्स में तो कम बनने चाहिए थे ना, तो इसीलिए 700.